आप हैं PNB, आप हैं RBI, and if you broke open a wrong locker, what remedial steps did you take at that time? पूरा रामायण खत्म हो गया और सीता कौन है अभी आप आए हैं, कितने साल बाद आए इस केस में? रोज ये केस का हियरिंग हो रहा है, आप फीस लेकर गायब हो गए। सॉरी माय लॉर्ड। क्या? वेयर वेर यू? Mistake, I am not. What mistake? I am hearing this case on regular basis and you have disappeared. Your client has engaged you. She has all the right to proceed against you under the Consumer Protection Act. I will order for that. आप हैं PNB, आप हैं RBI. कल रात में हमको मिला है। Yes, Mr. Amicus, बोलिए। Filed a supplementary counter affidavit. Yes. Bringing on record the locker policy and what steps we have taken against the then. Yes, what steps you had taken? बैठिए तो मिश्रा जी, इनका चेहरा नहीं दिख रहा। कॉपी हमको मिला ही नहीं। हमको क्या एफिडेविट में नहीं, आप हमको बताइए। यू टेल मी दी स्टेप्स एंड इफ you broke open a wrong locker, what remedial steps did you take at that time? There are two issues. Number one, what happened was, I'll just give you background, that a new branch in Raza Bazar was being created, and therefore from Danapur, the entire 75 lockers were shifted. Amongst them was this locker, and unfortunately in the CBS system, it was not entered that it was presumed that it has been surrendered, and therefore no notice was issued. There is something amiss. No notice was issued to the hirer, but an inventory was prepared in terms of the guidelines, in which, besides two senior officials of the bank, there was a lawyer also, an independent witness also. That lawyer is your panel lawyer or independent lawyer? He was in the panel. So he is not an independent witness. But as per the guidelines, one advocate had to be. No. As per the guideline, one advocate of PNB is not required. As per the guideline, one advocate means an independent advocate who has no connection with PNB. My lords. चलिए आगे बढ़िए और बोलिए आप। जब बाद में ये सब हुआ, क्रिमिनल केस भी लॉन्च किया, ब्रांच मैनेजर कुछ दिन जेल में रहे, ट्रायल स्टेज में। Disciplinary proceeding was initiated against two officers, including the then branch manager. The charges were there. It was for proved charges. Penalty has been imposed against him. Penalty of? Penalty of reduction by one stage in the time scale period of 3 years. And what about the second man? The second man is Dipankar Chaudhary. He was also issued charge sheet under major penalty. That is annexure G. What is the punishment on Dipankar? Jail. The punishment on Dipankar? Punishment on the? This Dipankar. Dipankar. ये है, इनको खाली माइनर पेनल्टी हुआ सेंशर का, उनको मेजर पेनल्टी हुआ अबरार अहमद को। और किसको आपने वो लॉकर दिया? एक एम्प्लॉय ऑफ क्लर्कल कैडर की एम्प्लॉय को। ठीक है, दिया ना। जी। लॉकर इज ए वेरी sought after affair thing these days in a government bank. मिल जाता है। कब हमको आज दिलाएंगे? आज ही चाहिए हमको। बोलिए, आप दिलाएंगे? कहाँ से दिलाएंगे? बैंक वाला। आप बैंक हैं, आप बताइए, इंस्ट्रक्शन लीजिए। अगर इतना आराम से मिल जाता है तो आज ही हमको दिला दीजिए। सेंट्रल पटना में दिलाइए, किसी ब्रांच में देखें। Don't go by those instructions which Mr. Rohit Raj is giving you and his officers are giving you. But two things are there. That there was a mistake which the bank realized, therefore it proceeded. So it is an admitted fact that the bank committed mistake. So far as mistake is concerned, it may be a human error that it was not uploaded in the CBS when the branch was bifurcated.
But at the same time, there were procedures against penalty has been imposed against one major penalty against one minor penalty. So this petitioner, what should she get? Yes, अब आप आइए, अब आपका रोल खत्म हो गया, बैठिए। हाँ बोलिए, क्या मिलेगा इनको? आप कौन है? I am for the petitioner, minute, sir. पूरा रामायण खत्म हो गया और सीता कौन है? अभी आप आए हैं, कितने साल बाद आए इस केस में? रोज ये केस का हियरिंग हो रहा है, आप फीस लेकर गायब हो गए। Sorry, my lord. सॉरी माय लॉर्ड क्या? वेयर वेर यू? Due to mistake, I am not. What mistake? I am hearing this case on regular basis and you have disappeared. Your client has engaged you. She has all the right to proceed against you under the Consumer Protection Act. I will order for that. क्या कहना है आपका? बोलिए। जो क्वेश्चन हमने किया उस पर बोलिएगा, कहानी मत बताइएगा। My lord, sir, no notice has been served to the. चलिए बैठिए, अब आप समझ गए कितना आप पढ़ कर आए। हाँ बोलिए मिस्टर अमाइकस, कंपनसेशन इशू पर बोलिए। तो एक चीज खाली बता दें, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद द बैंक्स कुड नॉट हैव कम आउट विद अ पॉलिसी इन व्हिच वी हैव ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड दैट पॉलिसी। Supreme Court judgment says that ombudsman to formulate a policy. And in that policy you have appointed ombudsman, retired employees of bank who will favor you. जी, क्लॉज 15.2 है लायबिलिटी ऑफ द बैंक। उसमें लायबिलिटी ऑफ बैंक अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स लाइक फायर, थेफ्ट, बर्गलरी, डकैती, रॉबरी और इन केस ऑफ कमिटेड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बैंक टू टेक ऑल स्टेप्स फ्रॉम सो एंड सो। लेकिन as bank cannot claim that they bear no liability towards their customers for loss of contents of the locker in instances where loss of contents of locker are due to incidents mentioned above or attributable to fraud committed by its employees. The bank's liability shall be for an amount equivalent to 100 times the prevailing annual rent of the safe deposit locker. 100 तो क्या है? रेंट समय 700. 700 था, अभी 1500 है। 1500। But what is important, my lord, is that in contravention of the guidelines, they have taken about, I think, 25,000 as a fixed deposit. ये लोग लेते हैं। All Guidelines. this business is going on. Guidelines say My that wife 3 had to years pay spent- 1 lakh. 1 lakh. She had to also give a FD of 1 lakh few years back for taking a locker. बड़ा लॉकर लिया होंगे। नहीं बड़ा लॉकर नहीं, आपके पड़ोस में लिया और हमको बिना बताए लिया। इसीलिए कुछ हम तो एफडी नहीं करने देते। अमिताभ दासगुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में एससीसी ऑनलाइन में 2021 एससीसी ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 124 में क्या बोलिए? एक्शन था गाइडलाइंस डायरेक्टेड द रिजर्व बैंक टू ले डाउन कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस मैंडेटिंग द स्टेप्स to be taken by banks with respect to locker facility and to issue suitable rules and regulations in pursuance thereof. कितना आपके हिसाब से कितना कंपनसेशन बना? हमारे हिसाब से वो जो आज के रेंट के प्रिवेलिंग रेंट लिख रहे हैं तो 1500 रुपया रेंट है, तो 100 टाइम्स thereof would be 1.5 लाख। 1.5 लाख। आज तो लगता है 2000 रेंट है। इनके बैंक का पता नहीं। SBI आरबीआई में क्या रेंट है? हाँ, ये पीएनबी में क्या रेंट है? अभी 1500 रुपया। 1500 रुपया सालाना। एनुअल तो 1.5 लाख आप दे दीजिए। 1.5 लाख का चेक लाइए, कल चेक लाइए 1.5 लाख का। It is your own case, therefore you must come with a check of 1.5 lakhs. Then thereafter I will decide the case. तो दिक्कत होती है कि ब्रांच मैनेजर के हाथ में रहता है। किस ऑफिसर के हाथ में है? चीफ जनरल मैनेजर के हाथ में है। बुला ले उनको। तो बुलाने की जरूरत नहीं है, खाली समय। The Punjab National Bank has violated the guideline of the bank for payment of compensation as per the own admission of Punjab National Bank. सुनिए मिस्टर शाही, अभी बाद में इंस्ट्रक्शन लीजिएगा। क्या लिखा है? The Punjab National Bank has violated its own. It is admitted by Punjab National Bank that it has violated its own guideline for payment of compensation.
The compensation as per guideline is to be paid by the bank, which should be 100 times of the current market rent, current rent, yearly rent of the locker. 100 times the prevailing annual rent of the sale. वही लिख लीजिएगा 100 टाइम्स. कौन सा पेज पे है? Page 56 of the supplementary. पेज 56 ऑफ द सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट से ले लीजिएगा. इन दीज सर्कमस्टांसेस द पंजाब नेशनल बैंक विल कम विथ ए चेक in the name of the petitioner tomorrow of the compensation amount as admitted by them, failing which the chief general manager of Punjab National Bank will personally appear tomorrow. Failing which I have not ordered for personal appearance. Let us meet tomorrow. पैसा तो देना ही है, तो 20 उसको रखा जाए. No 20, चेक बनाना है. आप चेक तो बनिया जाएगा. रात भर खोल के रखिए, सीजीएम के ऑफिस में जाके ब्रांच मैनेजर को बैठाइए और ये ऑर्डर प्रोनाउंस कर दीजिए अभी.